guys, in last session we discussed about the some basic theory of motion under gravity and the textbook example. Okay, in this session we are going to discuss about the some practice example based on motion under gravity. Okay, let's start this session. So first example, motion under gravity. Here the number of data we have to find. A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second. From the top of tower of a 60 meter high, means from the top of 60 meter high tower. So let's we draw the situation for more understanding. Suppose you consider that is a ground. Here is the ground. Now consider this one is a tower. Okay, so that is what actually tower. What is the height of tower? 60 meters. So height is equal to 60 meter. Consider this height is what? 60 meter, and the ball is thrown from the top of tower. So let's consider here some person is standing like this and the ball is here. So this ball is thrown from here vertically upward direction, means this one. So what is the initial speed? V0 is equal to 20. So that is a V0 actually. Let's rewrite this data here directly. So V0 is equal to 20 meter per second. So this is given data to us. This height is equal to 60 meter. Find the maximum height from the ground. If ball is thrown upward, then what is the maximum height of this ball from the ground actually? So this case is very simple. Suppose first ball is moving upward, then again it's come back towards the ground. This type of situation. So this is the maximum height. Let's consider this maximum height is supposed to be h. If this height is h, then total height from the ground is what? Small h plus capital H. So let's we find this first thing. Maximum height of a ball. H is equal to what? We derived this relation in the previous session. Directly use this relation, V0 square upon 2g. So what is V0? 20. So 20 into 20 upon 2 into 10. 0 0 cancel out, 2 cancel. Answer is what? 20 meter. So this capital H is 20 meter. So total height from ground is what? So from ground, maximum height is equal to capital H plus small h. So capital H 20, small h 60. So answer is what? 20 plus 60. So H max is equal to 80 meters. So that is the first answer. This is the first answer. Now comes to the second one, that is first. Now let's we discuss a second example. Find the speed at the 30 meter height from the ground. Means we have to finding out the speed. So first we have to find the velocity. Speed, and what is the difference between speed and velocity? Speed is equal to magnitude of velocity. Speed is equal to what? Magnitude of velocity. But at what height? At a 30 meter. So 30 meter means what? When this ball is somewhere here. See, when the ball is somewhere here, its velocity is downward direction. Why? It moves upward and coming back. So this height is how much? 30 meter. This height is how much? 30 meters. So we have to finding out this data for this situation. So as per our theory, what is the situation? This initial point is counting as a 0 0. As per our theory, initial point is what? Always 0 0. So let's we just write this one. So that is a 0 0. So here we write down y0 is equal to what? 0 for each situation. For each situation, y0 is equal to what? 0. What is v0? V0, upward is positive, downward is negative. So here we use this sign convention. Upward side is all the thing is positive, and downward side all this thing is negative. So V0 is what? Plus 20 meter per second. And what is acceleration? So acceleration is equal to minus g. These data are fixed for all type of situation, because this has not changed as per our sign convention. Okay, now let's we write this data for the second one. So B, first you write down this whole data. So y0 is equal to what?
0. Acceleration is equal to what? Minus g. And what is the third data? V naught. So V naught is equal to what? V naught is equal to, let's we write this data in this format for more understanding. So y0 is equal to 0, v0 is equal to plus 20 meter per second, acceleration is equal to minus g meter per second square. We have to finding out the second में क्या find करना है देखो speed, so v. So we have to finding out the v, and again the at what position you want, at this position. So this position is actually this one. मतलब आप किस डायरेक्शन मूव हुई है इनिशियल से. So this is the initial position for us. So final position is towards the negative side. See, final position is towards the negative. And what is this total height? This total height is how much? Total height 60. This side is how much? 30. So remaining this side is how much? 30. 60 minus 30. So that is actually 30 meter. But in which direction 30 meter? Downward. Downward means negative or positive? Downward means negative. Downward means what? Negative. So here y is equal to minus 30 meter. So you think one equation in which this all data are present. So the simple one, y minus y0 is equal to v square minus v0 square upon 2a. Y minus y0 is equal to v square minus v0 square upon 2a. Put this all this value, you get the answer. So y is equal to minus 30, y0 is equal to actually 0. So put it is equal to 0. Okay, so is equal to v square, finding out minus v0 square 220 square upon 2, and acceleration is what? Minus 10. So 2 into minus 10, minus 20, minus 20 minus 30, that's minus minus becomes plus. So that is a 620 into 30. So 2 into 3 6 0 0. So 600 is equal to v square minus 220 square, that is a 400. So from this, what is v square? 600 plus 400, that is a 1000. So v is equal to what? Root 1000 plus or minus. So v is equal to plus or minus 100 root 1000 means what? Root 10 into 100. Root 10 into 100. Root 10 into 100. Root 100 means what? 10. So thus final answer is what? V is equal to 10 root 10 meter per second. That is plus or minus. Why plus or minus? Because you just take under root. Then both are possible. Now you want a speed only. आपको तो speed ही चाहिए. तो speed at 30 meter high from ground. So v is equal to plus 10 root 10 meter per second. You must be not. Why? Because if you consider this negative sign, so that is for velocity, but speed means magnitude. Speed means what? Magnitude. So you just use only plus sign. Okay, you just take under root. That is both are possible. See, minus 2 square is 4 and plus 2 square is also 4. So 4 under root is what? Plus or minus 2. Under root 4 means what? Plus or minus 2. Okay, so you must be remembering. Not this one. Let's see third problem. Speed of a ball at a time t is equal to 3 seconds. So we have to finding out the speed when the time is 3 seconds. So very simple. The C problem. Let's see. C speed या velocity, speed. Okay, speed at t is equal to 3 seconds. So you just write down the data. v0 is equal to 20 meter per second. Time is given 3 seconds. V is equal to finding out, and acceleration is equal to minus g. Remember one equation in which all data are present. So our answer is what? V is equal to v0 plus 80. So V finding out, v0 20, acceleration minus 10, and time is 3 seconds. So V is equal to what? 20 minus 30 minus 10 meter per second. But this is velocity, because this equation represents a velocity. If you have to finding out the speed, then plus 10 meter per second. So if you have to finding out the speed, so speed means
magnitude of velocity. So answer is what? 10 meter per second. Okay, not this example in your books. C. Now comes to the fourth one, D. Speed at ground. We have to finding out the speed at ground when this ball is reached somewhere here. So what is the speed? Let's see. Again we write down all this data. So y0 is equal to what? 0. v0 is equal to what? 20 meter per second. V is equal to finding out acceleration is equal to minus g, and you have to want the speed at this ground. आपको स्पीड कहाँ पे चाहिए? ग्राउंड पे चाहिए. तो फिर ग्राउंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो? देखो ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक का. This one, what is this total height? This h is equal to what? 60, but it is towards negative direction. It is towards the negative, means minus. जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल अप होके डाउन आया, बट डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव साइड में ही हुआ. देखो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? देखो नेगेटिव हुआ. सो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस h. यू मस्ट बी नोट इट. व्हाट इज हियर? y is equal to minus h. You think one equation in which is all data are present. So we get this final answer. Y minus y naught is equal to v naught square minus v square minus v naught square upon 2a. So put the value. Y naught is minus 60 is equal to v naught, y naught is 0. So let's put it is equal to 0. V square is finding out minus, that is 400. 20 square 400 upon 2 into minus 10. So what is final answer? So answer is what? V square minus 400 is equal to 60 into 10, 600 into 2, 1200 minus plus, so that is a 1200. So V 1200 plus 400, 1600 V square. So take under root. So V is equal to plus or minus 40 meter per second. But you want a speed. So speed V is equal to only 40 meter per second. Speed at ground. This negative sign indicates velocity. Negative sign indicates velocity, because if you consider this situation, see, you consider this situation, then the velocity is downward side. Downward means negative for us. But if you want a speed, then you just write answer in terms of positive sign. Okay. So must be not this one. Then after we are just go to the next one. Okay, not it. So this one. Now E, position of ball after 3 seconds from the initial position. We have to finding out the position of ball after 3 seconds, means y. We have to finding out the y from initial position. So write down this given data. Y0 is equal to 0, t is equal to 3 seconds, y is equal to finding out v0 is equal to what? 20 meter per second, and acceleration is equal to minus g. Think one equation. So very simple equation. Let's be right here. Y minus y naught is equal to v naught t plus 1/2 at square. ऐसा होगा. So y naught तो कितना है? 0 है. y फाइंड करना है. v naught कितना है? 20. t कितना है? t 3 plus 1/2 acceleration minus 10. 3 का स्क्वायर 9 हुआ. So 20 into 3. 20 into 3, that is a 60. This 5. That is what? 2 into 5. So 5 9s are 45. So minus 45. It means y is equal to 60 minus 40, 15 meter. So what is the meaning of this? So objects is somewhere here. See, that's maximum height is what? 20 meter. Maximum height कितनी है? 20 meter. बोला ऑब्जेक्ट्स यहाँ कहीं पे होगा 15 मीटर पे. ऑब्जेक्ट्स है यहीं कहीं पे होगा 15 मीटर पे. ठीक है. There is a 2 possibility like this. So you must be noted. And the second question is quite important from this one. F, distance. Displacement is very simple. Equation gives us displacement, but if you want a distance, then you must be not something different. So you have to finding out the distance covered by the ball in 3 seconds. तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि देखो 15 मीटर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. इतना डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? 15 मीटर. अगर बोल यहाँ पे भी है और या यहाँ पे भी है, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा. कितना होगा? 15 मीटर.
तो आपको पहले देखने पड़ेगा कि बॉल फर्स्ट पोजीशन में है या फिर सेकेंड पोजीशन में है। वाई यू वांट अ डिस्टेंस, सी आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए अगर फर्स्ट पोजीशन में है तो डिस्टेंस इतना होगा, सेकेंड पोजीशन में डिस्टेंस इतना यहाँ से यहाँ तक का होगा। सो डिस्टेंस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, डिस्टेंस इतना भी हो सकता है, डिस्टेंस इतना भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स वी जस्ट गेट दिस आंसर। सो एफ डिस्टेंस कवर्ड इन बाय बॉल इन 3 सेकेंड, सो दैट्स अ इम्पोर्टेंट डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, दैट इज आवर क्वेश्चन। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन पहले ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज अ टावर, यहाँ पे बॉल है, ऐसे ऊपर गया, ठीक है। सो यहाँ से ऊपर जाके वो वापिस आए, दिस इज द 0 0 फॉर अस, that is what actually 0 0 for us, and this maximum height is how much? 20 meter, as we know, we already derived this height as. So first we count this, how much time is required to reach this point. Okay, so time required to reach the maximum height, इक्वेशन डायरेक्टली यूज करो, टी अप हमारे पास है ही, तो टी अप इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जी, टी अप इज इक्वल टू व्हाट? वी नॉट अपॉन जी। सो व्हाट इज वी नॉट? सो वी नॉट इज इक्वल टू 20 अपॉन जी इज 10, so it means 2 seconds. So when this ball is thrown, that time is what? 0 second. When the ball is reached at the maximum point, what is the time of? So that is a 2 second. It means ball is actually somewhere here, so that this displacement is becomes 15 meter. So it means how much this distance? This distance is equal to how much? 5 meter. Okay, so actual position of this ball is 2, not 1. 1 पे बॉल, 1 पोजिशन बॉल यहाँ पे है, तो फिर इतना ही डिस्टेंस को, लेकिन 2 सेकेंड के बाद मतलब 3 सेकेंड पे तो बॉल यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड में चले, वहाँ वापस 1 सेकेंड में आया, तो फिर टोटल डिस्टेंस इतना हो गया होगा, कितना? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस covered in 3 seconds, consider D is equal to first this one, how much this one? 20, and this one total 20, उसमें से 15 सब्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 मैंने फाइंड किया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 15, दस पोजिशन ऑफ बॉल फ्रॉम इनिशियल पोजिशन व्हेन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में बॉल कहाँ पे? 15 मीटर पे, बट 15 मीटर का 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, दिस वन position 1 and position 2, both in this both case displacement is same 15 meter, डिस्टेंस ही डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो कैसा है? सेम। और 3 सेकेंड पे बॉल हमें फाइंड करना था कि फर्स्ट पोजीशन पे या फिर सेकेंड पोजीशन में, तो फिर हमने क्या किया? देखो हमने ऐसा फाइंड किया, फर्स्ट पोजीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे से सी 2 सेकेंड में बॉल यहाँ पे पहुँच जाता है, तो फिर 3 सेकेंड में कहीं वापस ही आया होगा, तो ये सेकेंड पोजीशन है वही करेक्ट है। तो फिर डिस्टेंस कितना हुआ? फर्स्ट अप डिस्टेंस प्लस कम बैक डिस्टेंस, so total 20 this one and 5 this one. ओके, ये 15 नॉन डेटा है, ये डिस्टेंस 15 नॉन डेटा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 25 मीटर। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, you must be this type of question asking to you in examination, at that time you must be confused. Okay, so you just remember this method to get the answer, how to find the distance in this type of cases. Okay, not this example in your books, then after we are go to this next. Okay, not it. Let's see next one, F, and draw A versus T, V versus T, and X versus T graph. So here the symbols have their usual meanings, means as A is represent acceleration, T represent time, X is represent position, and V represents velocity. Okay, so very simple. See, acceleration is constant throughout the motion, free fall motion, and it is towards the downward direction. So first graph, A versus T graph. So here acceleration is constant, acceleration is equal to minus g is equal to constant throughout the motion, it never change. So throughout the motion is constant, so acceleration versus time graph is drawn in such a way.
and acceleration is equal to what, minus 10 meter per second. We also use our sign convention. So acceleration versus time graph. Now velocity versus time graph. Okay, second problem, velocity versus. So see, when you just throw the ball from the tower, its velocity decreases, and at the maximum height the velocity becomes 0. Its increases is in opposite direction. Its increases in opposite direction. So at t is equal to 0 time, its velocity is maximum v0, 20 meter per second. So if you have to draw the graph of v versus t, then at the t is equal to 0 time, velocity is maximum v0, in which unit, meter per second, and that is in a second. Here also we write the unit, this time is in a second, acceleration meter per second square. कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन है, तो v वर्सेस t ग्राफ कैसा होगा? So v versus t graph is a straight line motion. Why? Because vt graph slope is equal to what? Acceleration. So here है, तो यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे यहाँ हो गया ऐसा. Okay, now it's, this is the maximum height. This point represents a maximum height. मतलब वहाँ पे कितना टाइम था maximum height पे? देखो, how much time t up? 2 seconds. So यहाँ पे वो 2 second में पहुँच गया. So that is a 2 second. And its velocity is increases in downward direction. Its velocity is increasing in a downward direction. Similar way, you want to draw the speed versus time graph, then you just draw the same graph by this way. Speed versus time. Then the graph is like this. That is a 2 second. But this negative velocity becomes positive, because speed never negative. Speed is a scalar, so speed never negative. So velocity versus, actually यही ग्राफ जो है हमें ड्रॉ करना है. ये ग्राफ तो एडिशनल है, ये आप पूछा भी नहीं है, ठीक है. बट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो वेलोसिटी इज नेगेटिव. सी हियर एवरीवेयर वेलोसिटी इज नेगेटिव. सी दिस वन, वेलोसिटी इज एट द ग्राउंड इज व्हाट? Velocity at ground is minus 40. Okay, but speed is what? Plus 40. See here, velocity at the some height is what? Minus 10 root 10, but speed is what? Plus 10 root 10. Okay, so there is a, both are possible. So velocity is negative. Velocity is negative, and when this ball is reach the ground, this velocity becomes a 0. Velocity becomes 0. Similar, when the ball is reach the ground, the speed becomes a 0. So this is the graph. This is the graph. Okay, you must be noted. Now the third graph, x versus t graph. X versus t graph. So initially where is the object? Initially we consider this object is where? 0 0. First displacement increases, first displacement positive, then after it again comes to 0. Okay, and then after displacement becomes negative. So first displacement is 0, it increases and comes to 0 again. So like this, first it is increases and comes to 0, then after displacement becomes negative. See here, displacement becomes negative from here, then after displacement is negative, and when it reaches the ground, its displacement is negative, constant. Okay, so its displacement is negative. How much this? Minus 60 meter. How much this? Maximum displacement 20 meter, and then after it is constant, it does not change. Why? Object is coming to rest after, that is a ground point. At the ground, after the ground point, this distance is, displacement is same. Whatever time is passed, displacement does not change. Why? Object is coming to rest. Okay, so this is the situation. Here this one, object is coming to rest. So this one, here also this one. Okay, so this is a simple case. You must be note this each graph in your books. Actually it is a not straight line, there is a drawing mistake.
This is not a straight line actually. It is a represents a curve like this. That is a simple drawing mistake because it's accelerating motion, so it's a curve. It's a curve. Okay, not this one. Then after we are just go to this next. Not it? Okay, let's see next example. Example number 2, practice example. An object is released from some height. Release means what? Initial velocity 0, free fall. Exactly after 1 second, another object is released from the same height. So let's we draw the situation. Suppose that is a ground. Here it is a ground. Objects is somewhere here. Objects number 1. Objects 2 is also somewhere here. First it is released. So V0 is equal to 0. This object is released at t is equal to 0 second. After 1 second, so this object is released at t is equal to 1 second. 1 second from the same height. Find the distance between the two objects exactly after 2 seconds. After 2 seconds, what is the distance between these two objects? Okay, of the release of the second objects. मतलब after 2 seconds कब से count करने? Second object release हुआ उसके बाद से. So when the first object is moving downward and suppose it's reached somewhere here, and second object is moving down, it reached somewhere here. When the second object is released, see, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बट कब चाहिए? एग्जैक्टली आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को कब रिलीज किया था? 1 सेकेंड पे. उसके उसमें 2 सेकेंड ऐड करो, मतलब ए पोजीशन है 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड की, और ए पी पोजीशन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की और सेकेंड. तो हमें ए डिस्टेंस चाहिए, हमें ए डिस्टेंस चाहिए. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितने टाइम तक मूव होता है? 3 सेकेंड तक. सेकेंड ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक मूव होता है? 2 सेकेंड तक ही होता है. देखो 1 से 3, 1 से 3. सो व्हाट इज द कंसिडर? सपोज इट इज y1 and it is considered y2. So distance between two object d is equal to y1 minus y2. Okay, what is y1? It's a 1/2 gt1 square minus 1/2 gt2 square. Why 1/2 gt square? See, what is original equation? Y minus y0 is equal to v0 t plus 1/2 at square. डिस्टेंस है तो फिर मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आंसर होगा? 1/2 at स्क्वायर होगा. ए सरेशन को g रख दो, तो y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर ऐसा होगा. सो y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. फ्री फॉल की कंडीशन में डिस्टेंस ऐसे काउंट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही चाहिए, तो मैंने दोनों को मैग्नीट्यूड में ही लिखा है. सो यहाँ पे g नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है. तो y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. सो 1/2 gt1 स्क्वायर माइनस 1/2 gt2 स्क्वायर. सो व्हाट इज t1 हियर? फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक मूव होता है? 3 सेकेंड तक. व्हाट इज t2 हियर? सेकेंड ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक मूव होता है? 1 से 3, मतलब वो 2 सेकेंड तक ही मूव होता है. देखो 1 से 3, और g कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो पुट दिस ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन, फाइंड द d. सो रिमेनिंग टास्क इज इन होमवर्क. ओके, सो आपको डी फाइन करना है. आपका आंसर कितना होगा? 25 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है. तो जो जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम, मीन्स कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. ओके, नॉट दिस एग्जाम्पल इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी आर गुड टू दिस नेक्स्ट वन. नॉट इट. लेट्स सी a balloon. That is example number 3. A balloon is moving upward. Balloon is moving upward with a speed of 20 meter per second. So let's see, consider, suppose it is balloon. It is a balloon. What is the speed of balloon? 20 meter per second. A stone is released from the balloon when this balloon is at 60 meter from the ground. So let's consider that is the ground. So how much it is? 60 meter. 60 meter from the ground. Now stone is somewhere here. Stone is somewhere here. That is a stone. So when it is not released, so what is the speed of stone actually? Speed of stone is also 20 because stone is inside the balloon. Stone is inside the bus. If you are inside the bus, then what is the speed? What is your speed? Speed of bus is equal to speed of you.
Okay, means your speed is equal to bus speed, like the similar. So what is the stone speed? So stone is also moving with the same speed, v naught is equal to 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी भी स्पीड सेम ही होगी. सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ए स्टोन की. फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ स्टोन, ये लिखना रहेगा. सो ऑफ स्टोन मतलब स्टोन की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? सो पहले तो स्टोन रिलीज होगा तो पहले अपवर्ड वेलोसिटी तो ऊपर जाएगा, कुछ हाइट से वो क्या होगा, उसके बाद वो रिलीज होगा तो उसके बाद वापस आएगा. बलून तो अप ही जा रहा है, बलून कहाँ पे जा रहा है? अब जा रहा है. तो फिर हमें ये मैक्सिमम हाइट मिली, तो इसको h लिख दो, तो फिर a क्या होगा? कैपिटल H. सो मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर अपॉन 2g. सो वी नॉट कितनी है? 20 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 10. सो 0 0 कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट. सो आंसर इज व्हाट? 20 मीटर. सो टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी? सो फ्रॉम ग्राउंड h मैक्सिमम. सो a जो है 20 हुई है तो 60 है ही, तो टोटल हाइट कितनी हुई? 20 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर. सो फ्रॉम द ग्राउंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, स्पीड एट द ग्राउंड. So when the ball, when this stone is reached somewhere here, what is the speed? So let's write down this given data. Then after you just try to solve out this problem. Okay. So let's consider the initial position is 0 0 always. Initial position is 0 0. So y0 is equal to 0. Initial velocity is upward side. So plus 20 meter per second. Why? Upward is always positive and downward is always negative as per our sign convention. Acceleration is minus g. What is y? See, this one is initial position, this is initial position, and this final position is this. So you are just comes downward side. See, ऑब्जेक्ट्स कहाँ से कहाँ आया? यहाँ से यहाँ तक आया, तो फिर वो नीचे आया कि ऊपर गया? नीचे आया, तो नीचे में क्या काउंट करना है? डाउन में क्या काउंट करना है? नेगेटिव साइन. सो मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एच. y इज इक्वल माइनस एच कितना है? देखो, व्हाट इज h हियर? सी हियर h कितना है? 60 है, 60. तो यहाँ पे 60 रख दो. सो y इज इक्वल टू माइनस 60, और आपको क्या फाइंड करना है? v इज इक्वल टू फाइंड आउट. सो यूज वन इक्वेशन एंड दिस रिमेनिंग टास्क इज इन होमवर्क. ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. सो b इज इन होमवर्क. ओके. नाउ सी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. यस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम फाइंड करना है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट c, time of flight. So let's write down the again given data. y0 is equal to 0, y is equal to minus 60. Why minus 60? Because objects is come from here to here, so downward side, not upward side. एक्चुअली अप में जा रहा है लेकिन अब जाके वापस नीचे आया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव साइड हुआ, तो इसलिए माइनस 60. ओके. वी नॉट प्लस 20, वी नॉट 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन माइनस g, and time is equal to finding out. This time is equal to time of flight. This time is equal to capital T, suppose. So find this, use this relation, y minus y naught is equal to v naught t plus 1/2 at square. Write down this whole value. Minus 60 is equal to 20 capital T plus 1/2 minus 10 capital T square. Put this value. So 0 0 0 cancel out. 0 0 cancel out, and this final answer is what? T square. This left hand side comes in a right hand side comes left hand, becomes plus t square minus 40 minus 12 is equal to 0. This 1/2 is multiplied everywhere. 1/2 is multiplied everywhere. So for just solve this problem and find the t. So remaining task is in a homework. ओके आप ये फाइंड करने की ट्राई करना. टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. लेट्स वी ट्राई टू सॉल्व आउट, डोंट वरी, लेट्स वी हैव टू सॉल्व. So how we get this answer? See, so use this this quadratic equation. So t is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the solution of t. That is the solution of t, where a is a coefficient of t square.
So what is the coefficient of t square? 1. B is a coefficient of t, so that is equal to -4. C is a coefficient, C is a one constant term, so C is equal to -12. मतलब टी स्क्वेयर के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है. टी के साथ क्या है, -4 है, तो यहाँ -4, रिमेनिंग क्या हुआ, -12, तो -12 इसमें रख दो. ये सॉल्यूशन है. कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपके पास है तो उसका सॉल्यूशन है t इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो पुट दिस ऑल वैल्यू. सो t इज इक्वल टू -b. सो -b कितना है, माइनस है, माइनस बिकम्स +4. दिस माइनस and this minus both are becomes a +4, so minus becomes +4 plus or minus under root b square minus 4ac. so under root b square, so -4 का स्क्वायर 16 -4 a कितना है 1, c कितना है -12 अपॉन 2 into 1. so finding out this +4 plus or minus under root 16. 12 4 जा 48, 12 into 4 48, so 16 plus 48, 16 plus 48 upon 2. so 48 plus 6, 48 plus 6 54, 54 plus 10 64, root 64 8. so answer is what, 4 plus or minus 8 upon 2. so 4 plus 8 12 by 2, so 2 possibility, 6 second or 4 minus 8 -4 by 2, t is equal to -2 second. but actually we know this is not possible, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा 6 सेकेंड. व्हाट इज अवर आंसर, 6 सेकेंड. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय दिस वे. सो दैट इज अवर मेथड टू सॉल्व आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस एग्जांपल. नाउ लेट्स सी, दैट इज अ सी प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज अ डी, पोजिशन ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द स्टोन इज रीच एट द ग्राउंड. मतलब कि बलून तो अप जा रहा है, स्टोन ही रिलीज हो, बलून तो अप ही जा रहा है, तो स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, देखो 6 सेकेंड लगता है. तो 6 सेकेंड तक जब ऐसे देखो, ए बलून है, स्टोन है, तो मूवमेंट को ऐसी है, देखो ए बलून है, ए स्टोन है. ओके, सो बलून मूव्स अपवर्ड, द स्टोन इज लाइक दिस. ओके, सो बलून तो अपवर्ड ही जा रहा है, कितनी सेकेंड तक अप होगा, 6 सेकेंड. 6 सेकेंड में स्टोन है और ग्राउंड पे आगे होगा, लेकिन बलून कहाँ पे होगा, ऊपर कुछ जगह पे होगा. सो ऐसी कुछ कंडीशन होगी. देखो बलून इज समवेयर हियर, सो बलून इज समवेयर हियर. ओके, बलून यहाँ पे कहीं पे होगा, बलून ऐसे कहीं पे होगा. सो फिर ए टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड की पोजीशन बलून की. तो टोटल हाइट बलून की फाइंड करनी है. तो पहले 60 तो थी, ये 60 तो थी, उसके बाद इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ. सपोज इसको डी काउंट करो, इसको कितना काउंट करो, डी. सो टोटल हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड व्हेन स्टोन इज at ground. सो टोटल सपोज डी डैश ले लो, तो कितना होगा, देखो 60 प्लस डी, सो 60 प्लस डी. तो बलून की मोशन तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसको तो 20 से ही जा रहा है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा 60 प्लस. सो डी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम. बट वो कौन सा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो 60 प्लस वेलोसिटी कितनी है बलून की 20, टाइम कितना लगा 6. सो 20 इंटू 6 120 प्लस 60 180. सो डी डैश इज इक्वल टू 180 मीटर. सो दैट इज द टोटल हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड. टोटल हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द स्टोन इज रीच एट द ग्राउंड. मतलब बलून तो अप ही जा रहा है, बट उसकी मोशन कैसी है. वाई वी यूज दिस रिलेशन, बलून इज मूविंग विथ constant speed in upward direction. इसलिए हमें क्या लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना है t, बट कौन सा t, कैपिटल T, 6 सेकेंड. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. सो दिस हियर द ऑल आंसर्स आर गिवन टू यू. यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस होल प्रॉब्लम
and you write down this problem in your books properly. Okay, not this